11th क्लास में हमने पढ़ा था कि नेशन एक देखने की चीज़ नहीं होती है, इट्स अ फीलिंग, ठीक है। टू कंट्रीज जैसे कि इंडिया पाकिस्तान, दैट वी कैन सी, बट नेशन क्या होता है वी कैन नॉट सी दैट, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। हम सभी जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे जो है हमारा इंडिया में वो है 15 अगस्त को। वाई इट इज़ सो? India attained independence at midnight on 15 August 1947. That's why we celebrate 15 August as an Independence Day, ठीक है। उसके बाद हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे थे वो रहे थे जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, नेहरू ने एड्रेस किया था। लाइक अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो अक्सर कहीं पे भी जाते हैं तो पीपल वॉन्ट्स हिज स्पीच, ठीक है। तो इन दैट सेम वे वहाँ पे नेहरू जी ने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस करते हुए एक फेमस स्पीच दिया था, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ड्यूरिंग दैट मिडनाइट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नेशनल गोल्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट तो हो गया, अब उसके बाद जो नेशनल गोल्स थे वो क्या थे? इंडिया विल बी गवर्न्ड बाय अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया जो है वो कैसी गवर्नमेंट के थ्रू जो है गवर्न किया जाएगा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसमें है कि गवर्नमेंट जो है अब आ जाएगी डेमोक्रेटिक होके, तो फिर वो पॉलिसीज जो है वो क्या क्या बनाएगी? Government policies will cater to the welfare of everyone, especially the poor and disadvantaged, okay. उसके बाद promise of freedom. After independence, the challenge was to realize the promise of freedom, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी थी। Challenges at independence. India faced difficult circumstances at birth as a nation state, okay. उसके बाद पार्टीशन एंड फ्रीडम, एक तरफ पार्टीशन हुआ, इंडिपेंडेंस केम विद द पार्टीशन ऑफ कंट्री लीडिंग एट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें हुई लोगों को, मतलब जो भी बसे बसाए घर थे वो इधर से उधर हुए थे, ओके। उसके बाद वायलेंस एंड ट्रॉमा, 1947 विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ट्रॉमा ड्यू टू मास डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स थे। फिर Despite turmoil, India focused on realizing several objectives post independence. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है challenges faced by the leaders. किनके द्वारा challenges face किए गए? Leaders के द्वारा. The leaders did not lose sight of the numerous challenges facing the nation. उसके बाद नेहरू speech at the Red Fort. नेहरू ने स्पीच दी रेड फोर्ट पे। जवाहरलाल नेहरू एड्रेस द नेशन फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947। फिर लिगेसी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इसका लिगेसी क्या है? इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज द रिजल्ट ऑफ डाइवर्स वॉइसेस एंड कलेक्टिव एफर्ट्स टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। नाउ नेक्स्ट इज पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। बर्थ ऑफ टू नेशंस. On 15 August 1947, India and Pakistan were formed due to the partition of British India. उसके बाद the partition theory ये क्या कहती है? According to the two nation theory championed by the Muslim League, Hindus and Muslims were two distinct nationalities. उसके बाद opposition to the partition, इसका मतलब क्या है? Indian National Congress opposed the two nation theory and the demand for the Pakistan decision for the partition. So the political competitions of the 1940s and British movement led to the creation of the Pakistan. उसके बाद principle of religious majorities. The regions with the Muslim majority were designated as Pakistan while the rest stayed with the India. उसके बाद challenges of division. फिर division के challenges क्या क्या रहे? There were difficulties since Muslim majority areas were not contiguous, leading to the separate territories as West and East Pakistan. Okay, उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार Khan's operation. Despite opposing the two nation theory, Khan's views was ignored and NWFP merged with the Pakistan. फिर क्या हुआ? पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल. These provinces had mixed populations, making the division complex and causing significant distress to the people. फिर प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज. मैनी हिंदूज, सिख्स एंड मुस्लिम्स फाउंड देमसेल्व्स एज माइनॉरिटीज इन न्यूली ड्रॉन टेरिटरीज ऑफन फेसिंग द वायलेंस. उसके बाद नेक्स्ट जो है
वो क्या दिक्कत थी? मास माइग्रेशन एंड वायलेंस हो रहा था. पार्टीशन लेड टू वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्स्ड माइग्रेशंस इन हिस्ट्री अकम्पेन्ड बाय कम्युनल वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद कल्चरल लीगेसी ऑफ पार्टीशन. Writers and artists from India and Pakistan have depicted the traumatic experiences of partition in various art forms. बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं NCERTs में. उसके बाद नेक्स्ट जो है assets and administrative divisions. Government employees, assets and even mundane items were divided between India and Pakistan. Next, a secular ideal. Despite the partition, India national leaders envisioned a secular nation ensuring equal rights for all religions. उसके बाद next है Gandhi's role during partition. Mahatma Gandhi sought to heal communal rifts through his principles of non-violence amidst the riots. उसके बाद है Gandhi's assassination. Gandhi's efforts for the peace led to his assassination by a sectarian extremists on 30 January 1948. उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स. डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू टू मेन रीजन्स. वन वॉज ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड वन इज प्रिंसली स्टेट्स ruled by the local princes with the internal autonomy but under British suzerainty. Okay. उसके बाद end of paramountcy. Upon independence, the British ended their control. This meant 565 princely states were to decide on joining India or Pakistan or remaining independent. Okay. Challenges after independence क्या था फिर? Some states like Travancore and Hyderabad declared independence. Rulers like Nawab of Bhopal registered joining the Indian Union and jeopardizing unity and democracy. फिर government's firm approach. The interim government acted decisively to prevent fragmentation. Sardar Patel played a historic role diplomatically integrating most states into India. उसके बाद next जो है principles guiding integration. Three key considerations was there. Most princely states wanted to join India. Flexibility in granting autonomy and importance of territorial consolidation. These were the principles for the integration. उसके बाद next जो है वो है concept of instrument of accession. Rulers of states contiguous to India signed this document agreeing to join the Indian Union. उसके बाद challenges with the certain states. Difficulties faced with the integrating Junagadh, Hyderabad, Kashmir and Manipur differed from the others. फिर Junagadh integration की अगर हम बात करें, so the situation resolved via plebiscite favoring joining India. Hyderabad accession की बात करें तो Hyderabad, the largest state, desired independence, faced internal uprising and opposition by the Razakars. Indian army intervened leading to the accession. फिर मणिपुर's political evolution. इसमें क्या था? महाराजा Bodha Chandra Singh signed instrument of accession with the assurances of the internal autonomy. फिर है मणिपुर electoral milestone. Became the first Indian state with the elections based on the universal adult franchise in June 1948. फिर next है merger agreement of Manipur. Discussions with the legislative assembly led to the persuasion of Maharaja for a merger with the India. उसके बाद है role of Sardar Patel. Played a pivotal role in integrating princely states into the Indian Union, ensuring a consolidated nation. उसके बाद है reorganization of the states. So nation building beyond partition. The task of nation building extended beyond the partition and integration of princely states, focusing on the internal state boundaries. Next है importance of internal boundaries. इसका क्या importance रहा? So the internal boundaries had to reflect India's linguistic and cultural diversity while maintaining the national unity. फिर boundary drawing under colonial rule. Under colonial rule, boundaries were based on the administrative convenience or territorial conquests, disregarding indigenous cultural divides. उसके बाद है Congress and the linguistic principles. The Indian National Congress supported the linguistic principle for the state formation since 1920 Nagpur session. Post-independence reluctance. After independence, leaders hesitated to reorganize states linguistic due to fears of division and pending decisions about the princely states. फिर next विशाल आंध्रा movement. इसमें क्या था? The movement called for the separation of Telugu speaking areas from the Madras province into the Andhra state. फिर है Potti Sriramulu's East and Aftermath. इसका result क्या निकला? Potti Sriramulu's fasting led to unrest and compelled the government to create Andhra state in December 1952. फिर है State Reorganization Commission.
Commission. In 1953, the Commission recommended boundaries reflect languages, leading to the 1956 States Reorganization Act. Creation of linguistic states. अगर हम इसकी बात करें, so the 1956 Act resulted in 14 states and 6 union territories, reducing fears of disintegration and fostering unity. इसने increase किया किसको? Unity को. Linguistic states and democracy की बात करें, so accepting linguistic diversity was pivotal for the democratic progress, realizing a broader acceptance of political participation beyond elites. फिर next है democratic plurality, embraced linguistic states, underlined the acceptance of diversity and reaching democratic politics with the multiple ideas and ways of life. Next, the regional movements post 1956. So the reorganization continued, creating Maharashtra and Gujarat in 1960 following linguistic agitations. Next, Northeast reorganization. Starting in 1963 with the Nagaland, several northeastern states emerged by 1987, recognizing regional identities. उसके बाद next जो है वो क्या है? Recent state formation. So in 2000, Chhattisgarh, Uttarakhand and Jharkhand were created for cultural or developmental reasons. Telangana followed in 2014. Ongoing reorganization demands. Various regions continue demanding new states including Vidarbha, Harit Pradesh and regions with the West Bengal. So this is all about the first chapter which we have discussed through this video, challenges of nation building. Thank you so much for watching and stay connected. For any doubt, any query, you can comment me in the comment box.